जो ग्रेविटेशन के अंदर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन और केपलर्स 3 लॉज, ठीक है ना, केपलर्स 3 लॉज ऑफ मोशन, वो सब देखा था। और इलिप्स के भी कुछ प्रॉपर्टीज हमने स्टडी किए थे। तो भी आज के लेक्चर में हमको उसके आगे का जो टॉपिक है वो थोड़ा डिटेल में देखना है। दैट इज अबाउट द पोटेंशियल, gravitational potential especially, and gravitational potential energy. Okay, so let us start with that. Okay, so as we have already known that how the potential energy is defined is the work required to be done in order to assemble the system of masses. मतलब होता क्या है, देखो अगर सपोज ये एक मास है m1, उसका सपोज मास है, और ये सपोज दूसरा m2 इतना मास है। अभी इन दोनों को अगर हम सपोज r डिस्टेंस पे रखते हैं, तो इस r डिस्टेंस पे रखने के लिए कितना वर्क डन इनको करना पड़ेगा। तो वट एवर वर्क इज डन in order to bring these masses at these 2 points here, that is A and B, suppose for example, will be called as the potential energy, which will be stored in this system of 2 particles. And this potential energy can be obtained by just integration of f into dx, where क्योंकि f जो है ना वो वेरिएबल है यहाँ पे, तो f वेरिएबल होने की वजह से हमको ये इंटीग्रेशन का टेक्निक यूज करना पड़ेगा। So this integration of f into dx from infinity to r will be actually the work done, and this work done will get stored in this system as a potential energy, and hence this work done will actually be equal to, अभी f जैसा कि हम जानते हैं force of attraction between the two particles is actually given by the formula, that is g into m1 into m2 upon x square. If they are at a distance x from each other, then it will be x square into dx as it is. So that here g m1 m2 can be taken out because it's going to be a constant. So ये g m1 m2 को अगर हमने बाहर लिया तो अंदर में क्या बचने वाला है, integration of dx upon x square simply. And as we know that derivative of 1 upon x is 1 upon x minus 1 upon x square, करेक्ट है। तो उसके कारण हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ minus 1 upon x square will actually be equal to, into dx obviously, will be actually equal to 1 upon x. But since there is no minus sign here, यहाँ पे कोई माइनस साइन तो है नहीं, तो इसके कारण यहाँ पे हमको माइनस साइन इसमें से हटाना पड़ेगा और उसको उस तरफ ट्रांसफर करना पड़ेगा। So if we just transfer this minus sign in the other side, then we can be able to get that this integration of 1 upon x square dx is equal to minus 1 upon x, no doubt. And hence we can get finally that g m1 m2 into, here it will be minus 1 upon x, and that is also from infinity to r. So first of all we have to put this r x as r and then infinity and then subtract both of them. तो अगर वो सब करेंगे तो हमको नेक्स्ट स्टेप में एक्चुअली मिलेगा वर्क डन विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू g m1 m2 into, यहाँ पे आएगा माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, that is going to be w is equal to g m1 m2 into, here it is going to be minus 1 upon r only, क्योंकि माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी मतलब जीरो होता है, तो ये जीरो ऐड करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वर्क डन जो है तो वो हमको फाइनली क्या मिलने वाला है, माइनस ऑफ g m1 m2 अपॉन r. दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर वर्क डन as a final. Abhi, it's okay if you don't remember this whole derivation, still it will do, but just remember this final expression here. तो ये जो final expression है वो अच्छी तरह से याद रख लो। So that is the formula for work done in bringing both of these masses at a distance r from each other, and whatever work is done, the same amount of potential energy will get stored in this whole system
and that's why we can see the formula for potential energy will also be the same thing, that is G m1 m2 upon R. That's it. As we have already seen that the force between the two masses is actually given by G m1 m2 upon R square. But what is the basic difference between this formula and this formula here is that here there is R square, but here is no R square. It is simply R. That is the basic difference we have to understand. Okay, so this is the formula for potential energy, which is stored in between two masses of masses m1 and m2, and they are kept at a distance r from each other. Yes, so this is the first thing to understand. If we have the number of masses, suppose we have this mass m1 which is kept at this point A here. This is the mass m2 which is kept at the point B here, and suppose there is another mass m3 suppose which is kept at the point C. तो ये A, B, C पॉइंट्स पे तीन मासेस हमने रखे हुए हैं और इनके बीच में जो डिस्टेंस है तो वो अगर हम देखेंगे ठीक से तो वो है सपोज R12 is the distance between this m1 and m2. ओके, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस इतना है. R23 is the distance between m2 and m3, and suppose R13 is the distance between m1 and m3. No doubt. Then we can get the total potential energy of this whole system of three particles by just getting the potential energy between these two particles at a time. तो ये m1 और m2 के बीच में जो potential energy है वो हमको पहले निकालना होगा. इधर m2 और m3 के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फिर हमको निकालना होगा. और तीसरा m1 और m3 इन तीन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमको निकालना होगा और इन तीनों को ऐड करना होगा. तब जाके हमको टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिलने वाला है इन तीनों सिस्टम ऑफ चार्ज मासेस के अंदर. तो जिससे हमको ये मिलेगा G m1 m2 upon R12. Here this is actually going to be the potential energy between this system of two particles which are of masses m1 and m2 only. ये जो m1 m2 masses का सिस्टम है उसके अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है तो इतना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है Gm1 m2 upon R12 plus now we have to think about the potential energy stored in this system, that is m2 and m3. How much it is? We know that it will be G m1 m2 m3 upon R23. मतलब जो मासेस हम ले रहे हैं m2 और m3 हमने यहाँ पे लिया तो उनके बीच में का डिस्टेंस यहाँ पे यूज करने का बस मतलब. और तीसरा जो टर्म आएगा तो वो रहेगा ये वाला. तो मतलब m1 एंड m3 इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो एनर्जी स्टोर्ड है तो वो हमको ऐड करना है एज अ थर्ड टर्म which will be actually G m1 m3 upon R13, and this is actually the final formula for finding the total potential energy stored in between the system of three charges which are kept at certain different distances as shown in this figure. Okay, what will we do if we have four charges? Then अगर चार particles हमारे पास है m1 m2 m3 और m4, ऐसे चार पार्टिकल्स अगर हमारे पास है तो इन दोनों के बीच में या हर पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है तो वो हमको ढूंढना होगा. ये देखो m1 और m2 के बीच में डिस्टेंस कितना है उसको हम बोल देंगे R12. ओके, m2 m3 के बीच में डिस्टेंस कितना है तो उसको हम बोल देंगे R23. ओके, एंड m3 m4 उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है तो उसको बोल सकते हैं R34. ओके, एंड फाइनली द m1 एंड m4 इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है तो उसको बोल सकते हैं R14. But don't forget that m1 and m3 इन दोनों के बीच में भी तो डिस्टेंस है कुछ, and that pair is also there actually. So this pair will have distance R13 in it, and this remaining pair, that is also we have to consider. The distance between that is R24. So all the pairs we have to consider here. Remember. So if you consider pairwise, so the potential energy, total potential energy in this system is going to be the potential energy stored in every pair. Every pair has to be considered here. So every pair will contribute as a term.
in this expression. So the first term here will composed of m1 and m2 only. तो ये देखो ये m1 और m2 इन दोनों का जो पेयर है, तो उस पेयर के अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है तो वो हम ढूंढ के निकाल सकते हैं यहाँ पे, and we can just find it out by using the same formula which we have developed here. That will be actually G into m1 m2 upon r12, correct है? Yes. Plus the second one you will be consider the second pair m2 m3 वाला पेयर कंसिडर करो, तो उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है तो वो हम नोट डाउन कर सकते हैं G m1 m2 upon r23. Yes. Plus third pair we can denote it by this line here, and that will be the potential energy associated with that pair will actually be G m3 m4 divided by r34, and fourth pair here will be this one here, and the potential energy associated with that will actually be G into m4 into m1 divided by r14. Yes, and two more terms will be there, one of which will correspond to this pair m1 and m3, right? And the potential energy associated with that pair will actually be G m1 m3 upon r13. And finally the last pair we can deal with is this m2 and m4 वाला. तो इस पेयर के अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी जमा है तो वो हम देख सकते हैं G m2 m4 upon r24. Yes, so these will be the 6 pairs which we have to add all together so as to get the total potential energy stored in between this whole system of 4 masses here. Remember, so the system of 4 masses will contain the potential energy which includes 6 terms like this here. So ये 6 terms यहाँ पे आ जाएंगे, no doubt. If we have 5 masses like m1 m2 m3 m4 m5, then how many terms will be there? Can you work out? कौन बताएगा? चलो, just put it in chat box. How many terms will be there in the expression for the potential energy of these 5 particles? Yes, put it in the chat box fast. Just find out the number of pairs, how much they will be. Very first pair will actually be m1 m2. Do you agree with this? The second pair will be m2 m3. There will be one term corresponding to this pair. The third pair will be m3 m4, right? The fourth pair can be supposed to be m5 m4. Fifth pair will be actually m1 m5. No Khushi, not 7 pairs. Just count carefully. See, ये 5 pairs तो इधर ही हो गए, बराबर? Yes, very good. Atharva, there are 10 pairs. 10 pairs, Kashish, very good. See how 10, because अब देखो यहाँ पे और हम देखते हैं कि m1 और m3 इन दोनों के बीच में भी तो एक पेयर है, करेक्ट है? इधर भी एक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होगा. इन दोनों का जो पेयर है उसमें भी एक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होगा. इन दोनों का भी एक टर्म बनेगा, इन दोनों का भी एक टर्म बनेगा, और फाइनली देखो ठीक से ये दोनों जो दिख रहे हैं नहीं, ये दोनों का भी एक टर्म बन रहा है. तो इस तरह से हमको पता चलता है कि 5 टर्म्स जो है तो वो ऐसे ही हमको मिल रहे हैं, 5 टर्म्स. तो पहले 5 टर्म्स ये जो हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये 5 और ये 5 अंदर के 1 2 3 4 एंड 5, दैट्स इट. सो 5 और 5 कितने हो गए? 10 हो गए कि नहीं? तो इस तरह से हमको ये 10 पेयर्स हमको मिलने वाले हैं. We can just denote them these terms by 1 2 pair, दूसरा रहेगा 2 3 pair, तीसरा रहेगा 3 4, चौथा फिर रहेगा 4 5, then it will be 5 1, then it will be 1 3. ओके, देखो ठीक से 1 3 का एक पेयर बनेगा. फिर और कौन सा बनेगा? देखो 2 4 वाला एक पेयर बनेगा, करेक्ट है? 2 4. Then it will be 3 5 also, correct? 3 5. Then we can say it will be
1 3 2 4 3 5, then 1 4 is also there, correct? It is not included here anywhere, so 1 4 is also there, 1 4, okay. And at the same time 2 4 sorry 1 4 is also there, and 2 5 will also be there, correct? 2 5, like what you say, 2 5, this is the last pair. So these are the 10 pairs we have got it here. So in general, if suppose we have 6 particles, अभी करो आंसर, अभी देखेंगे कौन बराबर आंसर देता है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 पार्टिकल्स हैं। अभी ढूंढ के निकालो कितने पेयर्स रहेंगे और कितने टर्म्स रहेंगे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में। जस्ट डोंट काउंट, just try to find out the general formula for that. Very good, Athar. Otherwise, applying the concepts which are studied in combination, permutations and combinations in maths, isn't it? Yes, factorials और permutation combination के अंदर जो तुमने concept पढ़ा है अभी already, मुझे लगता है कि तुम्हारा maths के अंदर permutation combination ही चल रहा है कि नहीं? तो उसके अंदर तुमने already पढ़ा है कि अगर हमको number of pairs ढूंढने हैं तो number of pairs मतलब क्या? देखो पेयर्स का मतलब क्या होता है, वी हैव टू सिलेक्ट 2 एट अ टाइम, करेक्ट है? वी हैव टू सिलेक्ट 2 फ्रॉम 6, करेक्ट? इफ यू वांट टू सिलेक्ट 2 फ्रॉम 6 ऑब्जेक्ट्स, देन इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू दैट? कितने नंबर ऑफ वेज में हम वो कर सकते हैं? इन हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट 2 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम 6 ऑब्जेक्ट्स, that is called as the combination, correct? And we can do it in 6C2 ways. And 6C2 का मतलब क्या होता है? 6 into 5 upon 2 into 1, that's it. And it will be actually 15, that's it. So in this way, even if we have 8 points, 8 masses here, then out of these 8 masses, in how many ways we can select 2 of them? We can do it in the 8C2 ways. That means 8 into 7 upon 2 into 1. That means actually it will be 28. Okay, so there will be 28 pairs. That means 28 terms will be there in the expression for potential energy of the 8 particles here. Okay, so in this way we can do it. Just अभी चलो ठीक है, ये तो एक general result हो गया. So in general, we can do it in NC2 ways. Remember, NC2. If there are n particles, then there will be NC2 number of terms in the expression for the potential energy of the n particles here in this way. चलो ठीक है, तो ये हमने एक बात देखी. Now we will see the concept of gravitational potential. See here, what is gravitational potential? ठीक है, तो जैसा कि हमने अभी देखा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो हमने देख लिया, बिल्कुल. तो किसी भी एक पर्टिकुलर 2 पार्टिकल्स अगर है, इनका मास अगर m1 और m2 है, तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर रहता है? अगर वो r डिस्टेंस पे है तो हमको पता है कि U is equal to G m1 m2 upon r. This is the expression for potential energy between the 2 particles, no doubt. But now if we consider the gravitational potential, so what do you mean by the gravitational potential? Is the potential energy per unit mass is actually called as gravitational potential. Remember, what is gravitational potential? I repeat, the potential energy per unit mass is actually called as gravitational potential. तो पोटेंशियल एनर्जी को हमको क्या करना है? मास से डिवाइड करना है, इससे हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिलता है. और अभी देखो, अगर सपोज एक पार्टिकल हमारे पास है, ठीक है, या एक प्लैनेट है हमारे पास है जिसका मास सपोज m1 है, m1, और यहाँ से r डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट है, पॉइंट पार्टिकल नहीं है, देयर इज नो मास हियर, but just there is a point and we want to find out the gravitational potential at this point here. What we have to do is
वी हैव टू ब्रिंग अनदर मास. सपोज यहाँ पे यहाँ से एक हमने मास जो है वो यहाँ से यहाँ पे लाया और यहाँ पे रख दिया. तो जैसे ही एक मास हम यहाँ पे रख देंगे, उसका मास सपोज m0 है मान लेते हैं. तो इस m0 मास मास वाले पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो हम ढूंढ सकते हैं उसको u दैट इज गोइंग टू बी एक्चुअली इक्वल टू g m m0 या g m1 m0. Yeah, no need to call this as m1, we can call it as simply m here. Okay, तो इसको अगर हम m बोल देंगे simply, तो हमको मिल सकता है कि the potential energy between these two particles will actually be equal to g m m0 upon r only. But as as our definition tells us that potential energy upon mass is called as the gravitational potential, right? So इसका जो फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा एक्चुअली, gravitational potential is actually going to be the potential energy upon mass. So if we just do that, then potential energy कितना है, ये पूरा जो देखो ये potential energy है, तो वो अगर हम डाल देंगे यहाँ पे तो हमको मिलेगा g into m into m0 upon r, which has to be divided by this mass of the particle whose potential is to be found out. इस m0 से हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, so that this m0 will just get cancelled, and hence the gravitational potential V can be obtained to be simply gm upon r. So this is actually since we know that this gravitational potential energy is always negative, so because of that we can say that this will be minus sign will always be there in the gravitational potential. So this gravitational potential is actually going to be the minus gm upon r. This is the formula for gravitational potential of any particular mass. Once you find out the gravitational potential, we don't require this mass to be kept here. तो इस पॉइंट का पोटेंशियल तो हमको अभी ऑलरेडी मिल चुका है, तो फिर अभी इस मास को उठा के फेंक दे सकते हैं, और यहाँ पे इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है तो वो हमको मिल चुका है अभी, इट इज v which is given by this formula here. ओके, तो इस फॉर्मूला से हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिलता है किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टिकल का. बट अभी अगर हम सपोज अर्थ के बारे में कंसिडर करते हैं, तो देखो ठीक से, इफ सपोज दिस इज द अर्थ and suppose we have a body or any point which is kept on the surface of earth. तो अगर सरफेस पे अगर हम देखेंगे तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा किसी भी मींस अर्थ की वजह से किसी भी बॉडी का यहाँ पे सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, तो उसको हम लिख सकते हैं v नॉट. v नॉट मतलब क्या, द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अर्थ which will actually be equal to given by the same formula, but only this r has to be replaced by capital R because it is the radius of earth. So इसलिए यहाँ पे आ जाएगा minus g into m upon capital R. This will be the potential at surface of earth. And suppose if we want to find out the potential at a height h above the earth surface, तो h इतने हाइट पे अगर हमको पोटेंशियल ढूंढ के निकालना है तो फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पे r plus h डाल देंगे, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस कितना बनता है उस केस में r plus h बनता है, इसलिए पोटेंशियल एट हाइट h vh we can say will be obtained to be minus of g into m upon r plus h in this way. So in this way we can get the potential at the surface and at a height h above the surface. And now finally if you want to find out the potential energy, then the potential energy at the surface of earth will be obtained to be simply equal to, क्योंकि देखो अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास, करेक्ट है. So if we just take this mass in that side, then this mass will just get multiplied, and we can write that the potential energy is equal to mass into gravitational potential. तो ये सिंपल सी बात हमको पता चलती है, और इसको अगर हम यूज करेंगे तो we can say that the potential energy is always equal to mass into potential. So if you want to find out it at surface, then we can say that the potential energy of any body of mass m at a surface will be obtained to be simply equal to m into v naught, where v naught is already given here. ये देखो ये v naught का वैल्यू है, वो अगर हम यहाँ पे रख देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट द सरफेस टू बी इक्वल टू m into minus gm upon r, capital R. Okay, which can also be written as minus of g capital M into small m upon capital R. Here understand that this capital M here is going to be the mass of earth actually, and this small m is going to be the mass of body here.
ओके, किसी भी बॉडी का जो मास है वो स्मॉल m बनने वाला है, और कैपिटल M मतलब क्या है, अर्थ का मास है वो, ठीक है। तो दिस विल बी द expression for the gravitational potential energy of any body which is kept on the earth's surface. And if you want to find out the potential energy of any body which is kept at the height h above the earth's surface, then we'll have to multiply this m by vh which is already here. तो ये vh हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो अगर वो डाल देंगे इधर तो हमको मिलेगा m into vh, मतलब ही क्या, तो ये बनेगा माइनस g m small m into r plus h. So this actually becomes the formula for finding the potential energy of any point particle at a height h above the surface. Remember this formula correctly, and also take the screenshot of this screen because this formula will be required to solve the MCQs. So that means, see here, I will once again just make it clear what we have done so far. तो अभी हमने क्या किया, देखो ठीक से, अगर सपोज हमारे पास एक बॉडी है, वो सपोज अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, ये सपोज अर्थ है, ठीक है। Yes, okay, this is suppose the earth, and suppose there is a body which is kept at the earth surface here. तो यहाँ पे अगर इस बॉडी को हमने रखा हुआ है, तो ऐसे हालत में इस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो कैसे हमको निकालना पड़ेगा वो, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो ठीक से, तो u naught we can call it as, and it will be actually minus of g m small m upon r only, where m is going to be the mass of earth here. तो ये m माना क्या है यहाँ पे, अर्थ का मास है, ये देखो अर्थ का मास जो है वो कैपिटल M से हमने डिनोट किया इधर, और जो बॉडी का जो मास है तो वो यहाँ पे हम स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं, राइट। और एट द सेम टाइम अर्थ का जो रेडियस है तो वो रेडियस यहाँ पे कैपिटल R से हम डिनोट करने जा रहे हैं। सो दिस कैपिटल R इज गोइंग टू बी एक्चुअली द रेडियस ऑफ अर्थ, रिमेंबर, समझा ठीक से। तो that means the potential energy of any body at the surface of earth is always given by the formula minus of g m m upon capital R, where m is going to be the mass of earth and small m is going to be the mass of body whose potential energy is to be found out. So this is the basic formula for finding the potential energy of a body at the surface of earth, okay. And at the same time, if you want to find out the potential energy of any body at a height, suppose at a height h above the earth surface, समझो कि यही डायग्राम हम फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं, देखो ठीक से, या चलो इसी बॉडी को अगर हम थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, ये सपोज यहाँ पे मैंने h इतने हाइट पे इस बॉडी को लेके गया, ठीक है, तो बॉडी तो वही है, उसका मास उतना ही है, but we have taken it at a height h above the earth's surface. So in that case, the potential energy of this body at this point here can be obtained to be simply UH we can call it as, and it will actually be minus of g m small m upon r plus h here. तो इसमें r के बदले क्या आ गया, r plus h आ गया, उतना ही डिफरेंस हो गया, देखो ठीक से, क्योंकि इन जनरल व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ ड्यू टू अर्थ एट ऑफ एनी पॉइंट, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला जो है इन जनरल क्या है, माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन स्मॉल आर है, where this small r stands for the distance of this body from the center of earth, which includes this radius of earth also, and hence if we add this radius of earth with the height h above the surface, then we can automatically get r plus h here in place of this small r if we are having the body at a surface at a height h above the surface in this way. तो ये जनरल फॉर्मूला है, और अगर सरफेस पे चाहिए तो स्मॉल r के बदले कैपिटल R डाल दो, बस खत्म, तो इससे हमको ये मिल जाता है बिल्कुल। बट अभी आप सोच रहे होंगे कि हमने 10th स्टैंडर्ड में तो ये सीखा था कि अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, और h इतने हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है
वो mgh के बराबर हुआ करता है। याद है ये बात तुमको? देखो ठीक से, we have learned in the 10th standard that the potential energy of a body at a height h above the surface is going to be mgh. This is the formula for potential energy. We have learned it in the 10th standard. And now we are saying that the potential energy of the body at a height h above the surface is given by this formula. And the potential energy of the body at the surface of Earth is given by this formula. Where this formula come from? And what happens to this formula then? ये हमारा formula किधर गया? जो हमने 10th standard में already सीखा था. तो actually गड़बड़ ये है, याद रखो ठीक से, कि 10th standard में जो तुमको सिखाया गया था कि the potential energy of the body at the surface of Earth, a surface is zero. That was not actually true actually. तो वो कोई सचमुच ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी बॉडी का सरफेस पे जीरो बनता है। याद रखो ठीक से, द बॉडी हैज सम पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ आल्सो। तो मतलब बॉडी का जो सरफेस एनर्जी है, सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी जो सरफेस पे होता है वो जीरो नहीं होता है, क्योंकि अगर पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे जीरो होता तो बॉडी नीचे गिरना नहीं चाहिए था। अगर हमने समझो सरफेस पे कोई बॉडी अगर रखा और अगर सपोज एक कॉइन वहां पे डाल दिया और वहां पे एक सपोज कुआं है, तो उस कुएं में वो कॉइन जाके गिरेगा या नहीं गिरेगा? जरूर नीचे गिरेगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये कॉइन नीचे गिर रहा है, इसका मतलब जरूर उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी तो है ना, तब तो नीचे गिर रहा है। अगर उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता तो वो नीचे गिरता ही क्यों, है कि नहीं? तो ये हमको समझना है कि and even if we continue to dig such a bore or such a hole in the earth up to the center, it will continue to go towards the center. It will continue to get attracted towards the center, which means that the potential energy of a body can never become zero so far as it is in the earth's gravitational field. जब तक कोई बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, तब तक उसका पोटेंशियल एनर्जी कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता है। सरफेस पे भी उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होता है, हाँ भले ठीक है, ये बात समझ सकते हैं कि इट इज कांस्टेंट। तो अगर कोई बॉडी को हम यहाँ पे रखेंगे या यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, all points are just equidistant from the center, and that's why we can say that the potential energy is same at all the points on the surface, no doubt. तो कांस्टेंट है ये समझ सकते हैं बिल्कुल, लेकिन जीरो है ऐसा नहीं बोल सकते हैं। लेकिन क्या है ना कि अभी चलो सपोज जब हम 10th स्टैंडर्ड में थे तो हमको ये बताया गया था कि पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस इज जीरो बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली। ओके, हमको तभी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज कितना होता है वो ज्यादा जरूरी था एक्चुअली। फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ वाज नॉट more important at that time, but what is important is the change in potential energy when the body is lifted up from the point A to the point B, which is at a height h above the earth surface. तो मतलब जब हम किसी बॉडी को यहाँ से यहाँ तक लिफ्ट करते हैं तो उस समय कितना वर्क डन होता है या कितना उसके ऊपर वर्क डन करना पड़ता है, तो उतना पोटेंशियल एनर्जी उसका उसके अंदर जमा हो जाता है, मतलब उतना उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है। तो वो जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था mgh वाला, तो वो फॉर्मूला एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए था, ना कि पोटेंशियल एनर्जी का था। पोटेंशियल एनर्जी का अगर फॉर्मूला देखना है तो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, रिमेंबर, ओके? एंड दिस इज द गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी एट द हाइट h above the surface. But if you want to find out the change, then we can do it. See here, if we take the body from the point A to the point B at a height h above the surface, then by what amount the potential energy of the body will change? That is, suppose we want to find it out. So that means we want to find out the change in potential energy, that is delta U here. So it can be found out by just subtracting the potential energy at the surface from the potential energy at the height h above the surface. So that means we have to subtract UH minus U naught. Okay, so if we do it here, then UH is nothing but minus of G m small m upon R plus H, correct है? तो ये हो गया हाइट का पोटेंशियल एनर्जी। इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो, तो वो बन गया माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R ओनली। And then if we just simplify this further, then we can get this minus of G m small m
upon r plus h kept as it is, and this minus of minus will become plus, and it will become plus gmm as it is divided by capital R as it is. And now if we take this gmm common, then what we are left inside is, तो देखो यहाँ पे ये जो टर्म है वो फर्स्ट लेता हूं मैं, तो वो बन जाएगा 1 अपॉन r, और ये वाला जो टर्म है वो सेकेंड टर्म के एज अ पोस्ट टर्म डालता हूँ, तो क्योंकि ये माइनस साइन जो है तो वो माइनस साइन यहाँ पे बीच में आ जाएगा ना फिर, तो ये माइनस ऑफ 1 अपॉन r प्लस h बन जाएगा, करेक्ट है. एंड देन इफ वी ट्राई टू टेक द एलसीएम हियर, then we can get this gmm into here. If we take the LCM, then we can get this r plus h minus r, and that is to be divided by r into r plus h, right? And if we just cancel this r here, then we can be left with g capital M small m into simply h upon r into r plus h. Okay, and now just we have to divide this both numerator as well as denominator by r square here. ठीक है, तो r स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे, तो उससे क्या होगा, देखो ठीक से यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे मिलेगा g m small m into h the whole divided by r square. Okay, capital R square, and that is to be divided by this again r into r plus h, which is to be divided by r square again. So we have divided numerator and denominator by r square here. So here this r gets cancelled once here, and one r will be left as it is, which will be distributed here in the both of the terms in the denominator, and this gm upon r square will be kept as it is in one bracket, so that we can get this in the next step as m into bracket में आएगा capital gm upon r square, and that is multiplied with h, and that is to be divided by, ये r तो एक कैंसिल हो गया, एक बचा, और वो जो बचा तो उसको हम अगर दोनों तरफ अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा r प्लस h अपॉन r, मतलब r अपॉन r प्लस h अपॉन r, so that we can get the change in potential energy finally to be simply equal to. अभी देखो यहाँ पे एक बात याद रखो कि gm अपॉन r स्क्वायर माना क्या होता है. We already seen that this gm capital gm upon r square is nothing but the formula for small g here, correct है. तो ये फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे तो इससे हमको क्या मिलेगा, ये पूरा g बन जाएगा, तो इससे हमको मिलेगा m into g into h, that is to be divided by 1 plus h by r, correct है. देखो ठीक से, so this is actually the formula for getting the potential energy, change in potential energy whenever a body is lifted up from the point A to the point B, which is at a height h above the earth's surface. And here one more thing is that if suppose this h is very small than r, तो अभी देखो अगर ये h का जो वैल्यू है वो अगर r से बहुत छोटा है, कितना छोटा, सपोज अभी अर्थ का रेडियस जो है वो हमको पता है 6400 किलोमीटर है, तो उसके सामने 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर क्या है, कुछ भी नहीं. So in that case we can just neglect this h by r factor, and we can just take this one only, and 1 plus 0, तो देखो यहाँ पे h upon r in this case will be very small, and it will be negligible as compared to this 1 here, and in that case the change in potential energy here will actually be obtained to be simply equal to mgh upon 1 plus 0, and 1 plus 0 मतलब 1, and mgh upon 1 मतलब simply mgh. So this is the formula which we are used to use in the 10th standard. So यही है formula mgh, the change in potential energy equal to mgh, and that is also, it is the approximation of this formula actually for h by r is negligible small. ठीक है ना, तो जब h by r बहुत छोटा होता है तो ऐसे हालत में हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन रिमेंबर दैट दिस इज द फॉर्मूला फॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड नॉट द पोटेंशियल एनर्जी इटसेल्फ. रिमेंबर, so formula for potential energy is actually this one at a height h above the surface, and this one is for at a surface of earth, but this is only the formula for change in potential energy when the body is moved from one point to other point which is at a height h above the surface. Remember, okay, so this is the formula. And now अभी कैसा है कि 10th स्टैंडर्ड में तुमको
Just wait. Okay, so and if suppose a body is projected up, सपोज ये अर्थ है और यहाँ पे बॉडी जो है वो हमने ऊपर तरफ अगर प्रोजेक्ट किया तो कितने हाइट पे वो जाके वापस आएगा, तो वो निकालने के लिए हम 10th स्टैंडर्ड में क्या करते थे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द हाइट h अबव द अर्थ सरफेस, ये दोनों को इक्वेट करते थे, बराबर। तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, ऐसा हम करते थे। और इसमें से m कैंसिल करके तो हमको ये वेलोसिटी भी मिलता था, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh करके। और इसी फॉर्मूला से हमको v वेलोसिटी मिलता था, किस वेलोसिटी से बॉडी को थ्रो किया जाना चाहिए ताकि वो h इतने हाइट पे जाके वापस आए। और इसी फॉर्मूला से हमको h भी मिलता था, मतलब हाइट भी मिलता था। अगर हमने उसको v इतने वेलोसिटी के साथ थ्रो किया तो वो कितने हाइट पे जाके वापस आएगा, तो वो निकालने के लिए हमको v स्क्वायर अपॉन 2g, ये फॉर्मूला से हमको वो मिलता था, करेक्ट है। तो दिस वाज द फॉर्मूला which we are used to use in the 10th standard for finding the velocity with which the body should be projected up so that it will reach up to the height h above the earth's surface and then come back to the earth's surface. Or if you want to find out the height h above the earth's surface, or we want to find out the velocity with which it should be projected so as to get it up to the height h above the surface, or to find out the height h above the surface to which it will reach up so that the velocity v is projected with it, मतलब उसको जब हम v velocity से प्रोजेक्ट करेंगे तो कितने हाइट पे जाके वापस आएगा, ये निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे। और अगर हमको h इतने हाइट पर जाके वापस लाना है उसको, तो उस केस में कितने वेलोसिटी से उसको थ्रो करना चाहिए, तो वो निकालने के लिए हमको ये वाला फॉर्मूला यूज होता था, ठीक है। ये 10th स्टैंडर्ड के फॉर्मूले हम यूज करते थे, ठीक है। बट अभी हमको इन फॉर्मूलेस को मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में कभी भी तुमको ऐसा कभी क्वेश्चन कोई नहीं पूछा गया रहेगा कि इफ सपोज अ मिसाइल इज प्रोजेक्टेड विद 8 किलोमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन फाइंड आउट द हाइट एट विच इट विल रीच अप टू, ऐसा क्वेश्चन हमको नहीं पूछा गया था। या कोई बॉम्ब अगर हमने बहुत दूर तक थ्रो किया है, या ऐसे इतने हाइट तक थ्रो किया है जो अर्थ के रेडियस से भी ज्यादा है, तो ऐसे क्वेश्चंस के साथ हमने डील नहीं किया है। बट यहाँ पे अभी हमको करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए ये जो फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, वो नहीं यूज करना है हमको, क्योंकि हमने ऑलरेडी अभी देखा कि दिस फॉर्मूला इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ एन अनदर फॉर्मूला विच इज मोर जनरल देन दैट। तो ये फॉर्मूला हमको यूज करना है फॉर फाइंडिंग द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड वी हैव टू इक्वेट दिस change in potential energy with the kinetic energy given to the body, and then we have to get the formula for the velocity as well as the height. अगर हम करेंगे तो kinetic energy which the body should be projected with will be equal to the change in potential energy. So in that case this kinetic energy half mv square will actually be equal to mgh upon, अभी जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया ना, mgh that is whole divided by 1 plus h by r, ओके। तो इसको अगर हम यूज करेंगे तो अभी इसमें से m कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा v स्क्वायर, तो ये 2 उस तरफ चला जाएगा तो हमको मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh that is to be divided by 1 plus h by r, and if we take the square root on both sides then we can get this v is equal to root of 2gh that is to be divided by 1 plus
h upon r, and this will be actually the final formula for finding the velocity with which the body is to be projected up, so that it will reach up to the height h above the earth surface. If this h is comparable with radius of earth, in that case we have to use this formula here, otherwise this is okay. ये जो फॉर्मूला है वो हमको सिर्फ तभी यूज करना है जब हाइट कंपैरेटिवली स्मॉलर है, रेडियस के अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटा है, तो उस केस में दिस फॉर्मूला विल बी ओके. But in case when the height is comparable or height is significant, so that this h by r can never be neglected, so in that case we have to use this formula in a better way. Okay, तो फॉर्मूला तो ऑलमोस्ट सेम ही है. देखो लगभग यहाँ पे √2gh है ऊपर से सिर्फ, और यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं √2gh दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस h बाय r. तो ये डिनोमिनेटर में जो 1 प्लस h बाय r है वो फैक्टर सिर्फ यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया है, बट इट मीन्स or it works and it is to be used only when h is significant, remember. Chalo, ठीक है. So that's it for today. So we'll stop here and continue the next part in the next lecture, but I will request all of you to remember all these formulae so that you can use them in the MCQs. Chalo, ठीक है. So thank you all of you. Bye bye.